March, which is celebrated as International Women's Day around the world, where we recognize women for their cultural, political and socio-economic contributions to society. And here's wishing all of you listeners a very, very happy Women's Day. Today's women are multifaceted. They not just actually take care of their careers and their personal aspirations, but also of their family. But in all of this juggling, they forget one of the most important things that can support this journey of theirs, and that is their health. Which is why this International Women's Day, Alkem Oncology is spreading awareness about 3 major cancers which are most prevalent in India: breast cancer, ovarian cancer and cervical cancer, through their educational initiative, She Beyond Pink 2.0. This would help women know what the screening options available to them or what symptoms would actually look like, so that they can pursue healthier lives dedicated to their passions. Which is why we have today on Radio City our doctor, our expert, who will spread awareness about the same from Alkem Oncology. Thank you, doctor, for taking out your precious time. Doctor, what is cervical cancer and what is the risk associated with it? So when cancer starts in the cervix, it is called cervical cancer. Cervical cancer basically happens in cervix, which is an organ connecting vagina and the upper part of uterus. Now, risk factors associated with cervical cancer are HIV/AIDS, smoking, and ladies having multiple sexual partners. These are the 3 most common risk factors for development of cervical cancer. What are the signs and symptoms of cervical cancer and how one can prevent them? So, early stages of cervix cancer, they might not have any signs or symptoms. Advanced cervix cancer, they cause bleeding or discharge from vagina. These 2 simple tests, pap smear test and HPV test, they can help in prevention of cervix cancer and also help in finding it early. Doctor, what is ovarian cancer and what is the risk factor associated with it? Ovaries are a part of the female reproductive system, and they lie beneath or beside the fallopian tubes. The uterus, fallopian tube, and ovaries form the entire complex or the part. Ovarian cancer is one of the commonest cancers in females which is found, and it is increasing day by day. It is assumed that hormonal imbalances, some of the environmental changes, and around 10 to 15% of the cases, some of the genetic factors, hereditary cancers, can play a role in increasing the risk of ovarian cancers. Hormonal manipulations, excessive estrogen exposure, treatment for in vitro, what is called infertility, all these could possibly lead to some hormonal imbalance and then may cause or predispose a female to develop an ovarian cancer. Doctor, what are the signs and symptoms of ovarian cancer and how it can be prevented? Ovaries are small organs which are situated in the pelvic cavity. Unless the tumors in ovary become big or they spread to the upper abdomen, there are hardly any symptoms. Vague lower abdominal pain, some discomfort are the commonest symptoms in the early stage. Unfortunately, these are disregarded and many times patients neglect these. When the tumors enlarge and come into the upper abdominal cavity or they spread and form water in the abdominal cavity, it's called ascites, or omental deposits, that is the time symptoms like bloating, abdominal pain, vomiting, pedal edema, that is swelling in the limbs, lower limbs, starts developing. By that time, the ovarian cancer or tumor has already reached stage 3. So these are the commonest symptoms that ovarian cancer may produce. Doctor, what is breast cancer and what are the risks associated with it? ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के अंदर होने वाला कैंसर है. कैंसर का मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट. तो वो chaotic होता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए वो फैलता जाता है. तो it's a tumor of the breast which is because of uncontrolled division of the cells. ये है. Doctor, what are the signs and symptoms of breast cancer and how it can be prevented? बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिन्हें अगर हम देखें और जल्दी उनके ऊपर एक्ट करें तो महिलाओं को ये कैंसर बहुत प्राथमिक अवस्था में पता लग सकता है और उसका बहुत अच्छा इलाज संभव है. वो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आपने मुझसे पूछे, मैं बताना चाहूंगा. ब्रेस्ट में कोई भी तरीके का चेंज हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट. सो यू शुड नो योर ब्रेस्ट. आपको अपने ब्रेस्ट
के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मली आपका ब्रेस्ट कैसा दिखता है, कैसा फील होता है, क्या उसकी शेप है, क्या साइज है। इनके अलावा बहुत ज्यादा जो ध्यान रखना चाहिए वो निपल पे रखना चाहिए, चमड़ी पे रखना चाहिए। निपल के चारों तरफ जो एरियोलर स्किन है, जो काली छोटी गोल चमड़ी है, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी बगल में हमारी एक्जिला या काक जिसे बोलते हैं, अंडर आर्म्स बोलते हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। और गर्दन के नीचे यहाँ जो हड्डी हम फील करते हैं, इसे ध्यान रखना चाहिए। इन इलाकों में अगर कोई भी परिवर्तन हो, वो परिवर्तन गांठ के रूप में हो सकता है, वो एसिमेट्री के रूप में हो सकता है कि हमें वहां दोनों तरफ कोई डिफरेंस दिख रहा है, मतलब सिमेट्री हम हमेशा दूसरी जगह को देख के कंपेयर करते हैं। उनकी स्किन में कोई चेंजेस हो, निपल के चारों तरफ की स्किन में अगर हमें कोई एलर्जिक चेंज दिखता है तो वो भी अर्ली कैंसर का साइन हो सकता है। अगर हमारी ब्रेस्ट की स्किन संतरे की स्किन की जैसे हो जाए, उसकी पील की जैसे हो जाए, ऑरेंज पील अपीयरेंस, तो वो भी कैंसर का एक साइन हो सकता है। निपल से किसी भी तरीके का डिस्चार्ज, चाहे वो ब्लड हो या सीरस हो, अगर उसके अंदर कोई कलर नहीं होता तो भी हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। मिल्क को छोड़ के नॉर्मली वो लैक्टेटिंग फीमेल्स जो होती हैं, उनमें मिल्क का डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है। उसके अलावा कोई भी डिस्चार्ज हो तो आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। हमारी अंडर आर्म में कोई गांठ है, हमारी गर्दन के नीचे हमें कोई गांठ फील होती है, तो इन सब का हमें बहुत जल्दी निदान करवा लेना चाहिए। और अगर डॉक्टर बोलता है कि इस पे आगे कोई जांच करानी है तो बिना टाले बिना करना चाहिए। उसका कारण ये है कि ओनली अर्ली प्रिवेंशन कैन सेव लाइव्स एंड इट इज वेरी कॉमन। ये इतना कॉमन है कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे अगर मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड में 1 in 8 फीमेल्स हैव अ रिस्क ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर थ्रू आउट हर लाइफ। 8 महिलाओं में से 1 महिला को बहुत रिस्क है कैंसर होने की, और हिंदुस्तान में वो रिस्क कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। और हमारे नंबर्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। Thank you so much, Doctor, for sparing that information, especially on the cancers most prevalent in India. I would like all the women listening in fact, everyone listening in on this International Women's Day, that if you experience any of these symptoms, please do not delay and consult your doctors and make sure that you live a healthier life so you can achieve all those dreams that you aspire for. She Beyond Pain 2.0, an initiative by Alkem Oncology.